हाय गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ ऑल थिंग्स कंपाउंडिंग। आज के इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मिस्टर कौशिक मोहन। ही इज अ फंड मैनेजर एट मोट पीएमएस, हैंडलिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर क्लाइंट्स इन फैमिली ऑफिस एंड पीएमएस। इस एपिसोड में हमने फॉरेंसिक अकाउंटिंग की डिटेल्स के बारे में बात की। हम सभी जानते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उन कंपनी से दूर रहना जो या घपला करते हैं या जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग गिमिकरी होती है एंड व्हाट नॉट। अगर हम उन कंपनी से दूर रहें, इट इज हाईली लाइकली दैट वी विल एंड अप पिकिंग ओनली दोज कंपनीज विच आर क्लीन एंड क्वालिटी बिजनेसेस, जो हमारे लिए अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस को आइडेंटिफाई कैसे करें जो घपला करते हैं, इससे रिलेटेड हमने इस पूरी कॉन्वर्जेशन में डिटेल में बात की। ना ही कौशिक ने बहुत ज्यादा रेशियोज के बारे में डिस्कस किया, ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट न्यूमरस एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो उन्होंने विटनेस किए ड्यूरिंग देयर रिसर्च एंड देयर एनालिसिस। आई थॉरली एंजॉयड दिस वीडियो एंड मेरे को पता लग गया है कि कैसे इन कंपनी से दूर रह सकते हैं। इफ यू वांट टू वॉच इट, स्टे ट्यून्ड बिकॉज वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ। Hi guys, welcome to the fifth episode of All Things Compounding, and I am super excited to have with me Mr. Koushik Mohan, who's a fund manager at MOAT PMS. Thank you so much, Koushik, for being here. I'm really happy. Thanks, Kashish. So it was been very long time that we are discussing about this, and thanks for me hosting you here. Perfect. So I've already shared with my audience कि आज हम पूरा forensic accounting के बारे में बात करेंगे, and we're gonna have your expertise helping us crack everything. So hope this conversation goes well. So to start off, I just wanted to ask you कि you being a fund manager at MOAT PMS, if I was to ask you कि if you were to rate between 0 to 100%, how much weightage do you give to forensics in your whole investment philosophy? How much would that be? So I would take this question in another way. So let me answer it like this. So क्या होता है, like what is forensics? It is actually cleaning the data that we have it. So don't take it as in the perspective like forensic मतलब कुछ तो scam हो रही है या तो कुछ तो हो रही है financials पे, उसको मुझे डिटेक्ट करना है, फाइंड आउट करना है. That's all is like another part only. Like मतलब वो नहीं है. Forensics मतलब people give this name as forensics very recently. बट ये कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट होता है व्हेन यू टेक एनी कंपनी, उसको डिग ऑन करके उसका नंबर्स तुम यूजर फ्रेंडली बनाओ. यूजर फ्रेंडली इन सेंस एनालिस्ट फ्रेंडली नंबर्स बनाओ. व्हेन यू मेक इट एनालिस्ट फ्रेंडली नंबर्स, यू वुड एक्चुअली डिग ऑन टू सो मेनी नंबर्स दैट इफ यू टेक ग्रोथ रेवेन्यू, ग्रोथ का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, ग्रोथ में क्या हो सकता है. दो ही चीज होती है, एक वॉल्यूम होती है, एक प्राइस होती है. सो देन डिग ऑन टू दैट नंबर. प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और क्या वॉल्यूम है इंडस्ट्री में, क्या प्राइजेस है. दैट्स एक्चुअली फोरेंसिक ओनली ना. Okay. You are trying to, someone is manipulating on price, but he cannot manipulate on volume, right? If he's trying to manipulate on volume, he's not manipulating on price. कितना तो मिल ही जाएगा हमको. Okay. That's so simple. So you're saying that you don't have a specific portion of your investment philosophy dedicated. The whole process is forensics because हर एक चीज जो आप कर रहे हो उसमें you have a very forensic eye towards it, and that is a very unique way of looking at forensic. Because whenever I have seen, मेरे को लगता था कि ये एक अलग सा part ही है, but now you've added a good perspective. To move on, I wanted to know कि are there any few forensic checks that are of utmost importance to you when you look for in a company, because there are a lot of things that can happen jo maybe you can also ignore or you can sort of keep at a side step, but कुछ चीजें होती हैं जिसमें you have zero tolerance policy कि बॉस अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा. What are those things that you look for to totally avoid such companies? So let me ask a question for you. I've seen some of your videos as well. So they are very informative. Thanks for them. So let me take it like this. Like you talk about ROC. You love a higher ROC, right? Yep. If you ask me, I never see ROC which is visible. Well, let's talk. What is ROC? Where is the ROC is been sources from? It's sourced from P&L and balance sheet. P&L is a manipulative statement. I can increase sales. I can forgery anything and then get my EBIT very high number. Let's go to balance sheet. If EBIT is higher number, net profit is higher number. If net profit is a higher number, balance sheet is again earning. This one total equity is higher. When total equity is higher, total liabilities will be higher. These liabilities should be matching with assets, so the entire balance sheet is higher.
राइट? तो यू आर ओनली वर्किंग विद समथिंग लाइक जो एक जोल जैसे हो गया, उसी जोल में आरओसी करके बात करेंगे हम। आरओसी पे ले रहे नंबर विच इज मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट ऑफ बोथ द साइड्स. When I have a two manipulative statements and two numbers which is taking from sources of these two statements, it's manipulative. So So how as do you an tackle analyst, it? I should clean that. Yes, I should clean that. Hmm. So let's take it. ROCE number ही बात करते हैं. EBIT, EBIT. What is this? EBIT से पहले क्या आता है? EBITDA, Hmm. right? EBITDA should be as equal as cash flow from operations. Yeah, ideally. Ideally, what's the major difference between them? Is the working capital Working changes? capital. Yep. हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब जो मेरा इन्वेंट्री में पैसा पड़ा है, जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेएबल्स में पैसा पड़ा है, दैट वाज द मेजर चंक व्हिच इज टेकिंग दिस टू बी डिफ्लेटेड. सो दिस आरओसी का नंबर जगह में, एबिटा जगह में, आई विल टेक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन व्हिच इज देयर इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन व्हाट आई गेट? देन आई गेट कैश का EBIT, EBIT, राइट? Yep. उसका डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का नंबर कर लो. बैलेंस शीट नंबर इज मैनिपुलेटिव, ओके, बट ऊपर वाला नंबर तो कम हो गया है ना, बैलेंस शीट नंबर ज्यादा दिखेगा. तो ये रेशियो और कम दिखेगी. इसके वजह से क्या होगा? सॉर्ट ऑफ दैट आई डोंट गेट इनटू ट्रबल. नाउ आई एम गेटिंग 12%, 15%, मेक सेंस. मतलब ये तो 15% कमा रहे हैं कैश टर्म्स पे. ही इज नॉट मैनिपुलेटिंग विद इट. ओके. सो इट्स फोरेंसिक. इधर फोरेंसिक हम बात ही नहीं किया. हाँ. इट्स जस्ट दैट द थॉट प्रोसेस यू गिव इट. नहीं, so this sort of reminds me of a quote of an old Wall Street adage where they say revenue is sanity, sorry, revenue is vanity, profit is sanity, whereas cash is reality. And Yes. we are calculating our return ratios based on this cash, which is the reality of business. So I think Yes, that is a yes. very good way and a very clean way of looking at all the financial statements. So moving on, I also want to understand the DuPont analysis of ROE, right? So us DuPont analysis mein there are multiple ways through which these ROE numbers can be inflated a lot, which isn't sustainable. And I remember us having a conversation way back as well. So do you mind touching on how can companies actually inflate this ROE, which can give a very lucrative picture, but asal mein aisa nahi hai? Okay, so let's break out DuPont. मतलब ROE को ही break out करता है. What is the ROE? Return that an equity investor will take home. Right? Yep. Whenever he is investing into like ROE को ऐसे समझो, it is like an IRR. Return that I am going to कमा रहा हूँ. मैं कितना कमाऊंगा वो मुझे बताना बॉस. That is ROE. Yep. So let's take it with another way. इसको breakout कैसे करते हैं? ROE सोर्स किधर से होती है? नॉर्मली बैलेंस शीट एंड P&L. P&L से टॉप लाइन नंबर आएगी नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट जो वो इक्विटी से आएगा. सो लेट्स टेक इट थोड़ा अलग ऊपर जाएंगे. मतलब लेट्स गो इनटू डीपर लेवल. मतलब ये ऊपर वाला नंबर जो नेट प्रॉफिट आया ना, वो किधर से आया? सेल्स की वजह से आया. तो सेल्स मतलब क्या होता है? असेट टर्नओवर होती है. ओके. सेल्स बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा? असेट्स को डालना पड़ेगा काम पे. सो दैट इज कॉल्ड असेट टर्नओवर रेशियो. उसके बाद अभी नेक्स्ट वन, रिटर्न ज्यादा करना है तो मुझे कैपिटल चाहिए ना. इक्विटी से कैपिटल. किधर से लाऊं मैंने कैपिटल? दो जगह है मेरे लिए, इक्विटी और डेट. वन इज डेट, इक्विटी और डेट. तो मैंने इक्विटी वाला को रिटर्न देख रहा हूँ. मतलब डेट वाला रिटर्न तो होगा ना उस पे. उससे पहले वाला नंबर तो डेट वाला था. तो मुझे क्या करूंगा? फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो देखूंगा इनटू अनदर वन व्हिच इज लाइक sorry, the net profit margin. हाँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन सॉरी, ये कट कर दो ना. नेट प्रॉफिट मार्जिन. ओके, द थर्ड नंबर इज नेट प्रॉफिट मार्जिन व्हिच इज लाइक नेट प्रॉफिट जो मैंने कितना कमा रहा हूँ मेरे बिजनेस पे, कितना सेल्स के ऊपर कितना कमा रहा हूँ. ये तीन रेशियो होती है ना. इस तीनों में कौन सा मैनिपुलेट कर सकता हूँ? इक्विटी और डेट वाला मैनिपुलेट कर सकता हूँ व्हिच इज फाइनेंशियल लिवरेज. मेरा आरओई को बढ़ाना है तो ये तीनों मल्टीप्लाई होता है ना. यप. तीन रेशियो मल्टीप्लाई होता है. सो व्हाट विल आई डू? आई विल टेक मोर डेट. I'll take more debt and make this number an higher number. फाइनेंशियल लिवरेज नंबर ज्यादा करूंगा. फाइनेंशियल लिवरेज मतलब क्या होता है? इट्स टोटल असेट्स डिवाइड बाय इक्विटी, टोटल इक्विटी. सो टोटल असेट्स ज्यादा रहेगा, टोटल इक्विटीज कम रहेगा, तो नंबर ही बड़ा है.
उस नंबर के वजह से ये टोटल आरओई बड़ा हो जाएगा हम्म एंड आई कैन मैनिपुलेट दिस लास्ट नंबर. हम्म सो गॉट इट. और दो नंबर तो नेट प्रॉफिट मार्जिन है एंड वन मोर इज दैट asset turnover. Net profit margin is also again manipulative because entire P&L statement can be manipulated. Forgery कर सकता हूँ ना. I can make increase my sales. I can get my net profit numbers as more and then see that profit margin might be higher. So enter that number is also forgery. So how do you tackle it? So what I'll take that step in another. I'll just cover the third ratio also, asset turnover. That is also manipulative. मैंने कम assets लगा सकता हूँ. हम्म कैपेक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया होगा, नया प्लांट को कंट्रीब्यूशन नहीं लिया होगा, ओके. तो वो कम असेट्स दिखा सकते हैं. वो कम असेट्स दिखाएगा. लाइक अनदर वन वी कैन कॉल इट इन अदर वे, लाइक contingent liability number, contingent liability which is off balance sheet, that should be actually in balance sheet. वो बैलेंस शीट में आएगा तो टोटल असेट्स बढ़ जाएंगे, टोटल लायबिलिटी बढ़ेगा ना, तो टोटल असेट बढ़ जाएगी. Yep. सो दैट इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी. उस तीनों की वजह से टोटल फॉर्मूला है तो हमको गलत दिख रहा है ना. Got it. तो इसको भी ना कैश टर्म्स में कन्वर्ट कर दो. How do you do that? Take cash flow from operations minus depreciation amortization minus interest that I paid to the government. The actual paid cash. to my debt holders. Yeah, actual cash बच जाएगा. उसमें minus taxes which I paid to the government. जो बचेगा that is like equal to net profit. उस प्रॉफिट पे डिवाइडेड बाय कंपनी का इक्विटी होल्डिंग ले लो. Then you get actual ROE. So by doing this ROE, you will understand that what is the actual return you are going to get. And ये ROE किसके लिए दिखेगा? This one is shown for the people who have invested in that company way before. ये तो current वाला को नहीं दिखेगा. So तुमको like if today I'm investing in this business, I have to not see that old वाला people का ROE. I should see my ROE. आई एम इन्वेस्टिंग दिस मच कैपिटल, मतलब मेरा बैलेंस शीट, मेरा सब कुछ एक कंपनी के लिए आज से बनेगी. तो मैंने आज से देखूंगा. ओके. सो माय कैपिटल इज इंक्लूडेड इन इक्विटी टुडे. वी शुड गो इन दैट अप्रोच. फाइन. And what about other forensic checks and all other, let's say we've already talking about financial statements, P&L के भी थोड़े से बता दो कि how do companies play around with these numbers and how do I as an equity analyst find them? So see, for me, I entered this industry since 2012 and मेरे इंडस्ट्री सबसे इज्जत वाला इन्वेस्टिंग सीखना और करना 2014 से है. So one ratio has saved me a lot. It's called cash that I paid to government divided by cash that I recorded in P&L, tax that I recorded in P&L. So direct cash which you get in cash flow statement divided by tax expenses that is there in P&L statement. If this ratio cumulative, don't take it 1 year. 1 year is very manipulative number. Take it in a cumulative process like 10 years or 15 years. तब देखो, is it greater than 60 or 70%? I prefer 60 or 70% because there is one difference. TDS है, tax deducted also, which will not come under this one cash flow. Another one, the income tax का और corporate tax का differences, which is depreciation on other assets fund. उसके वजह से ये changes होता है. ये थोड़ा भी हम इसको changes को neglect करने के लिए हम giving a leverage of 40%, 30 to 40%. If this ratio is in cumulative basis, it's not about 60%, then something is there, boss. Like try to be away from that place. Let me take, just guess me. Like if you can guess it, please guess it. So there are 5,000 companies listed. 7,000 है, वो double counting वो सब निकाल देंगे तो 5,000 plus companies listed. So tell me how many companies filter this ratio, which is about 60%. By any chance you know that? Maybe like 1,000. You can get 25,000 companies. Percent. You're very close. It's 28%. 28%. Okay. So 28% of the entire industry, जो भी 5,000 companies है, 28% filter out this above 60%. If you take above 55%, there are a lot of companies. Okay. If you can take 80% of them come under that place. So for me, it's been safe to be on 60. Okay. Fine. And what about balance sheet? Balance sheet में have you seen any companies playing around जो आपने identify किया हो and that has helped you
keep distance from such naughty players. Yes, in balance sheet also it has helped us a lot. So there are a couple of articles which are being published in media coverages. So I think you would have read about Somaya, one of Hmm. our example that we gave it. So balance sheet में क्या होता है? Like what is the balance sheet items? Like can you name them? Like if you can. मतलब asset में there will be current asset, non-current asset, and liability side will have debt and equity primarily. Debt and equity and current liabilities. Yeah, current liability. These are the four items. So tell me which and all numbers that I can manipulate. Plug multiple is called as equity is called as plug multiple. जो भी होगा ना उस पर डाल दो, कुछ भी मिसमैच आएगा उस पर डाल दो, कि तो वो नंबर के लिए ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है. डेट तो रिकॉर्ड होती है, करंट लायबिलिटीज भी रिकॉर्ड होती है, असेट साइड में कितना असेट्स है वो भी रिकॉर्ड होती है, करंट असेट्स भी कितना है वो भी रिकॉर्ड होते हैं. जो भी बच रही है उसको प्लग मल्टीपल पे डालता है. इट्स अ प्लग मल्टीपल, राइट? Yeah. Okay. So there is a company like in last 10 years, ROCE for that company was about 20% every year, each and every year. Okay. This number was about 20%. When you do in cash terms, this number is not even 10%. Achha. Why? Just because of equity multiple, which is the plug variable. And how is it playing out? What were they doing exactly? So I think I cannot take that example, or like I cannot go on very depth about the company which I'm talking, but I can take you how it is possible. Equity is a plug multiple, so they were actually showing less net profit. Okay. And that net profit was going under equity. प्लग मल्टीपल होते हैं ना, लाइक ऐसे फ्लो होता है. तो उसको थोड़ा कम, वो नंबर को कम ही रखते जा रहे थे इन लोग, टू मेक देयर आरओसी ग्रेटर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस इज कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में तो पूरा नेट प्रॉफिट दिखाते, बट उस पूरे को बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं कर रहे थे. हाँ, नहीं, दे वर टेकिंग आउट बाय टेकिंग डिविडेंड, दे वर टेकिंग आउट बाय डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स, मतलब इक्विटी डाइल्यूशन करने का. सो अदर वेज नेट प्रॉफिट तो कमा रहा है, वो उधर आने के टाइम पे ना वो पूरा नहीं आ रहा है, सो दैट नंबर इज ओनली गोइंग डाउन. बट व्हेन यू डू इन कैश टर्म्स यू अंडरस्टैंड दैट उसका क्या वैल्यू था एक्चुअली. एंड इफ आई मे आस्क कि ओवर 10 ईयर पीरियड उनका स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस would have also reflected and it would have been a good stock performer. Company very great performer, let me tell, very great performer. Achha. This company has performed solid, and to be very precise, we are actually writing an article about it. Okay. It will be very soon published. I hope it doesn't affect us. So I don't know what happens. Why do you think this some happens? Reaction, I hope. Why do you think this happens, Kaushik? Because what I can make sense is कि यहाँ पे intrinsic compounding तो हो नहीं रही, because that profit is not flowing into the balance sheet and expanding the shareholder reserves. If that is the case, why is it that over a 10-year period, the stock market is not appreciating this anomaly in the company? Okay, I'll go slightly deeper. Yep. Let's take इस company का float है 6%, free float. अच्छा, okay. समझ लो. And ये pump and dump concept समझ में होगा. Okay, I got it. Let's take it full conversation on this. This company, XYZ company, what they were doing, they were actually pumping their prices in a different way, like 75% promoter holding. 20% 75, 15% was with some institutional players. Okay. और उस institutional players में क्या होता था, जो institution था ना, उस एक company which was a promoter का related company. So basically there is a conflict of interest. हाँ, खुद ही खरीदा. No, there was ये हाँ खुद ही खरीदा था, but वो different place से खरीदा हुआ था. Through an institution. For example, हाँ, through an institution ये खरीद के उतना lock कर लिया. So 75 plus 15. Around 90. 90%. तो 4% तो हमारा, very honest, DIS were holding it. Okay. Like mutual funds. Okay. And the rest 5. Remaining is 6%. 6%. वो हमारा रिटेलर के पास. में काम नहीं, रिटेलर के पास भी नहीं था. इसमें ना PMS लोग होल्ड करते थे. Okay, fine. PMS का इंस्टीट्यूशनल में भी नहीं आएगा, DIA में भी नहीं आएगा, क्यों तो PMS लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल क्लाइंट का DP अकाउंट में होल्ड करते हैं. अच्छा, हाँ, yes, got it. इधर 3% वो लॉक हो गया. Okay. Left in market 3%. वो PMS, different companies come into market, tell this is the best company to buy.
this is the fundamentally strong company, this is like that, like this. Okay. Start going up. Since the free float is so low and demand accordingly. So I think ये बहुत ही mind boggling concept था कि even though fundamentals were not agreeing, still stock price can go up for extremely long periods of time because even free float is a very good factor to look at. I think, and this also gives us the psyche and the sort of mentality of the promoters, and we can judge the promoter ki governance as well. Am I right to say this, Kaushik? Yes, you are perfectly right to tell that. So, but there is a formula to judge the promoter. Okay. So एक फॉर्मूला से एक अमाउंट निकल के आता है, उस अमाउंट को कैसे यूज कर रहे हैं उससे जज कर सकते हैं हम प्रमोटर को. Can you describe थोड़ा bit in detail? Okay. So take cash flow from operations. माइनस मेंटेनेंस कैपेक्स जो होती है डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जो बिजनेस को मेंटेन करने के लिए होती है, उसका माइनस टैक्स जितना मैंने पे करना था गवर्नमेंट को उतना पे कर दिया, माइनस इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना है उतना पे कर दिया, माइनस मेरा डिविडेंड कितना देना है मेरा शेयर होल्डर्स को वो माइनस कर दिया, जो बचेगा कंपनी के पास, जो एक्चुअल कैश बचेगा. सी वेयर द मैनेजमेंट इज यूजिंग इट. If they are buying back their own shares, or they're putting capex, or they're taking that money and buying, taking all the debt को reduce कर रहे हैं, or they're actually taking that money and giving a loan for someone else, which might be a related party, which might be something else. Okay. इससे क्या होगा? Management judgment आती है. So basically you're trying to find that number जो मैनेजमेंट के पास बचा है जिसका कैपिटल उन्होंने एलोकेट करना है, एंड वो उसको कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि what sort of intentions do they have. And Kaushik, on similar lines, related party transactions की बात की हमने, can you पहले तो just very simply explain related party transactions होती क्या है, किस टाइप की होती हैं, what are few very common related party transactions that we can witness in Indian course companies, and यहाँ पे मेन पंगा कैसे आता है, like how issues arise in this situation. So related party transaction is allowed, but एक capping है उसके पे. Related party transaction मतलब क्या होता है, like I can actually buy if that person is giving me at a discount. वो मुझे जो भी दे रहे मुझे वो मुझे related party हो सकता है, but वो discount पे आ रहे हैं, I'm getting at a very good deal for the company, then why it is a good deal, why will I not choose it? And because of that it's becoming a big number, that's fine. Okay. So लोग क्या करते हैं, वो capping का number सुन के they will be like okay इतना है तो हम लोग करना है, related party breach हो गया तो नहीं इन्वेस्ट करना है, that is but देखो डील क्या है वो. Okay. ये समझ में आने के लिए 10 साल की तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा. अच्छा. So simultaneously related party transaction मतलब Kaushik is related to Kashish is giving one of the services which he has it at a discount price. That's a related party. But if I do it abnormal price, जो recent news was there about Asian Paints, if we clearly remember, there was a whistleblower. The person who whistleblowed was one of the great person media में. He was one of the person in 2008 में and 1992 हर्षद मेहता scam पे, केतन पारेख scam पे. He was actually exposing this with Suchita Dalal. Okay. That person pointing out on Asian Paints was something very big, and we saw the reactions what happened also. Yep. So this is one kind of related party that we have to take care, but we have to see what's the deal actually. What's the actual then come out the judging. Okay, fine. And क्या बोलते, where can I find this data? Annual report में ही, I'm assuming everything is available in annual report. But how do you find it? So this is like annual report में जाओ और annual report पे related party करके एक section है which is very important. उधर जाके देखो और उधर कुछ कंपनी का नाम दिया जाएगा. Take the company, Google में जाके search करो MCA वेबसाइट में, then you get the company's data. Download that, understand कितना related है. Okay. Then understand is it कितना वो worth है क्या उसको देखने के लिए नहीं. It's very going to be very इसीलिए like taking judgment on one company minimum takes 8 to 9 months. Okay. नहीं, I think obviously इतना time लगता ही है because we have to go through a lot of data and we cannot jump to conclusions so easily. So Kaushik, moving on to the next section, right? I have received a lot of queries regarding companies being way too aggressive in recognizing their revenues, right? And I'm pretty sure conventional forensic checks exist करते हैं to find these. Can you help me understand हम क्या क्या देख सकते हैं
to sort of keep track of whether the revenue recognition practices is in line with, let's say, industry per se, or is it being way too aggressive? So very too aggressive. There are three terms: aggressive or moderate, or is going with a conservative concept. Aggressive कब होता है और conservative कब होता है? एक company क्या करता है? They will not fudge with their numbers, but they recognize their revenue in such a way that उस time के लिए aggressive recognize करता है. What is the intention to do that aggressive or conservative numbers? So let's take it like this. Boom market area. Market is booming. And now if I give conservative numbers also, I will get rewarded for my stock prices. Yep. Now let's go into bear market. In bear market, securing my stock price is very important for the manager, like the company, because उनका align किधर होगा? उनका stock price के साथ align होगा. उनका incentive should be aligned with their stock prices. Normally top level management will get ESOPs, और उनका ESOPs को ये लेने के लिए वो number अच्छा नहीं रहेगा तो उनका ESOPs का value नहीं रहेगी. Yep. To keep it stable in bear markets में, they will put it a very aggressive numbers. So there is a formula over here. एक छोटा सी formula, trade receivables divided by total sales करके देखो. इससे ये समझ में आ जाएगा, is it an aggressive or conservative or anything else. So Kaushik, आपने बताया कि ये ratio है, right? Total receivables upon sales, but this is an absolute number. How do we make sense of it? उसका क्या करें? Whom do we compare it to? Industry से compare it with industries. Okay. Industry numbers के साथ compare करो. Industry मतलब peers. मतलब peers also is very again manipulative. Peers cannot be every time a peer for me. You have to clean the number for peer also, because उसका revenue, उसका cost और उसका उस business के लिए segment थोड़ा हो सकता है. Like tell me, like Reliance को किसके साथ compare करूँ मैंने? I have to divide Reliance into so many companies and then compare with each and every company. And उस कंपनी के साथ जो peer भी है, वो भी बहुत सारा मल्टीपल बिजनेस में रहेगा, उसको भी क्लीन आउट करना पड़ेगा डेटा को. इट्स कॉल्ड क्लींजिंग डेटा. एंटायर फोरेंसिक मतलब जो भी बोलते हैं हम लोग उसको क्लींजिंग डेटा बोलते हैं. And clean the data and then understand them. Okay, fine. So if it's so I'm assuming कि if the percentage is too high, इसका मतलब they are being very aggressive, and if it's the percentage is too low, they are being conservative. Yes. इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं? Go as a client to them, or else trade receivables. किसको वो पे करना है? मतलब किसको पे किया है? जो कंपनी हमको पे करना है. ट्रेड रिसीवेबल्स लिया है ना कोई कंपनी, उसके पास जाओ एज ए क्लाइंट. उसके पास जाकर क्लाइंट जैसे बात करके देखो, इज इट तुम क्यों उस कंपनी के साथ लिया, मतलब व्हाट इज योर तुम खुद प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, वो प्रोडक्ट का एंड वैल्यू किधर से, स्टार्ट वैल्यू तो मेरा कंपनी से लोन पे ले लिया एंड ये बना रहे एंड प्रोडक्ट. उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ट्रेड पेएबल्स होगा, बट मेरे लिए वो ट्रेड रिसीवेबल्स है. उसका ट्रेड पेएबल्स मैं उसको जाकर बात करूंगा तो तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल से कितना अच्छा कॉन्टैक्ट है तुम्हारा. And now another way of checking is that go for talk to my trade payables. Honestly, सबसे ज्यादा ना हमको ये समझ में आएगा हमको किसको हम लोग पैसा देना, उससे बहुत अच्छा समझ में आएगा कंपनी के बारे में. किसको हम लोग पैसा देना, उससे हमको कंपनी के बारे में बहुत अच्छा समझ में आएगा. क्यों? तो वो उसका नंगा करके नाचेगा. मतलब he'll talk about the company in the way that even we didn't expect about it. Okay. Because I have to pay the person that money, right? So A company and B company. So if A is supplying to B, तो अपने को B से जाके पूछना है कि भाई आप बताओ, you basically are having a channel check with them and trying to ask them their honest and direct feedback कि what's their interaction, why do they deal, and वहाँ से हमें aggressiveness का भी पता लग जाएगा, because then they can tell us कि since they were aggressive, हमें काफी lean credit terms पे अपना सामान मिल भी गया and ज्यादा discount भी मिल रहा है. Okay. Yes. So take this example in Dmart terms. Dmart is an retail company. वो तो सेल करता है. Dmart को जो दुकान में, वो Dmart के दुकान पे जो प्रोडक्ट्स रखता है, वो क्या होता है? वो तो क्रेडिट पे लिया होगा ना. Yep. Dmart takes in credit. Yep. But Dmart का कॉन्सेप्ट में ऐसे नहीं है. मतलब they have to take it in credit. But what Dmart do? Dmart takes less credit time. So the supplier will be happy to give it to Dmart rather than Reliance or someone else. So now going to supplier and talking that why are you comfortable to give it to him? Why are you giving it to Dmart? An insight.
So you're asking तुम डीमार्ट को क्यों दे रहे हो, किसी और रिटेलर को क्यों नहीं दे रहे? That will give क्यों you an नहीं करा? insight कि why डीमार्ट का Yes, business model is such कि it will always strong. okay, that's fine. ये I think That how that's DMart works with the same philosophy like Walmart, but hmm slight changes. If you want, I can take this more further. DMart yeah का example I can take more further. So if tell me, I have a question for you. Like, why is DMart created? DMart क्यों start किया गया था I promoter से? I have no clue. So he started that to affordability लेके आने के लिए he started, right? He Okay. want to give it at a big discount so that mass consumption comes to demand. Hmm. Mass मतलब जो who are like who has very low income in their family can come and buy their products over here so that they will get it at better deal, and as well as that they'll get good quantity and good quality. Hmm. But ये क्या हो रहा है? Wherever, like you have read lot of research report tells that wherever DMart comes, the shopkeepers near DMart will die. That you have heard about this, Yeah. but that's not true. That is not at all true. Okay. Why? So let's take it like this. DMart जो नहीं दे पाएगा वो actually वो shopkeeper दे पा रहा है. It's called credit. Okay. शॉपकीपर कब देगा? कितना दिन के लिए फ्री क्रेडिट देता है? 30 डेज के लिए फ्री क्रेडिट. Hmm. मैं क्या करता हूँ, मेरा एक बुक होता है, मैं सामान उधर लिखवा देता हूँ और मैं जाके पेमेंट करूंगा 30 दिन के बाद. मतलब हर महीना मुझे जब सैलरी मिलेगा तब दूंगा. नाउ इफ यू डू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर दैट शॉप जो क्रेडिट पे दे रहे हैं, यू लुक लाइक दे आर बुकिंग अग्रेसिव. Got it. अग्रेसिव मतलब उनका बैड है क्या? नहीं, उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है. उनका बिजनेस मॉडल वैसे ही है. That makes sense. So That's you have to go to back forth to play with the numbers. So I think all of it is very relative. कि we can't just Yes. conclude using just this percent कि aggressive है कि नहीं है. It varies a lot on the type of business model and the way they are trying to engage with both their customers and their suppliers. तो उससे हमें idea लग सकता है कि how they are being both aggressive or conservative. So before I move on to the rapid fire round, जहाँ पे मैंने आपसे लगातार question पूछूंगा, I have one last question. So मेरा ये क्वेश्चन है कि we've talked lot about the forensics of non-financial companies, right? But financial companies में हम forensic कैसे करें? So first help me understand कि why is it that financial companies differ a bit from non-financials and उनका forensics भी थोड़ा क्यों differ करता है? And then how can we approach this? Because I feel that financials में forensics is way more important than non-financials because financials में cash is the raw material. एंड वहां पे गफला होने का चांस भी ज्यादा है एंड अगर होगा तो शेयर होल्डर को दुख एंड लॉस भी ज्यादा होगा. So you took a very interesting concept. मतलब इस पे तो एक पूरा हम एक दिन भी बात कर सकते हैं. To be very honest. So let's talk about financials. Financial companies मतलब क्या होता है? They are levered business. Let's take example. Finance में भी दो तरह के होते हैं. Yep. एक NBFCs and एक banks. But NBFCs के according different है. Because they don't capital locking नहीं होता है उनका. SEBI doesn't tell them to cap the lock. RBI doesn't tell them to cap it. इतना कैपिटल सीआरआर में रखने का, एसएलआर में रखने का, इतना गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखने का, दे डोंट हैव. बट लेट्स टेक इट. मतलब इधर दो डिफरेंट बिजनेसेस है फाइनेंशियल्स पे, व्हिच इज वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स. Okay. एंड एनबीएफसीज कैन नॉट बी इन अ बैंक. Yep. So NBFCs has lot of money to lend money. बिल्कुल. Banks doesn't have lot of money to lend money. बैंक का दूसरा इनकम क्या होता है? अदर इनकम जो बैंक सर्विस देता है. That is also more important. People will see that okay, my loan book size is going up, तो मतलब बैंक अच्छा है. उसके एनपीए नहीं बढ़ रही है और लोन बुक ऊपर जा रही है, मतलब बैंक अच्छा है. That's the ridiculous way that we can see a bank. Okay. We have to actually see that 100 rupees जो बैंक का असेट है उसमें कितना लॉक हो रहा है और कितना लॉक होने के बाद कितना बचा है. एंड इंडिया इज सच ए यूनिक कंट्री दैट वो लॉकिंग का जो बचा है ना उस पर भी कंपनीज बी वेरी कंजर्वेटिव. They don't lend a lot of money. उसमें भी थोड़ा money they lend, and remaining money what they do, they use it for different services. Okay. Capital allocation they do it for different other purposes. Okay. So अभी हमको लोन बुक देखना पड़ेगा. लोन बुक में कितना डाइवर्सिफाइड है वो देखना पड़ेगा. Is it loan book is more concentrated towards take it like corporates? So HDFC, we talk about HDFC is a multi-bagger. HDFC Bank is a multi-bagger. From the day one when it got listed
till date it was a large cap company, it's a blue chip company, it was in Nifty 50 from the day one till date. But you saw it's a multi-bagger का मतलब छोटा कंपनी बड़ा होने का नहीं है, बड़ा कंपनी भी बड़ा हो सकता है। हाँ, सो उस टाइम पे आज तक हमने एचडीएफसी को देखेंगे, दे वर विद कॉर्पोरेट लेंडिंग से दे बिकम रिटेल लेंडिंग नाउ। It have to be changing with the economic cycle, and then we have to understand if the banking expert will able to predict that ये साइकिल में क्या हो रही है, इस टाइम पे कौन सा जैसे लोन बुक रहेगा तो अच्छा रहता है। That's a major point. That's a major point. So simultaneously, हाँ, and simultaneously बैंक को समझना है तो डीएसए को समझो, डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंट। ओके, डायरेक्ट सेल्स एजेंट उसको समझो, बैंक कितना डीएसए के साथ टाई अप में है, कि तो वही तो सोर्स करेगा लोन्स, वही तो फाइल लेके आएगा। बैंक सोच, यू थिंक दैट बैंक विल गो एंड गेट पीपल टू गेट लोन्स? नो, इट्स अ डीएसए हु गोस and then get them to the bank. And actually you also one of your, you have interviewed someone who is actually on a banking sector side. Yes, he's a DSA. Yes, Kulbhushan sir. Yes, so what he does, he has tied up with all the banks, and whatever loans he will see the file, which file matches for which bank, he mismatch करके उसको दे देता, and loan get approved. So and he's also earning. So I think हम बैंक्स के चैनल चेक में और प्राइमरी सोर्स, जैसे हमने वहां पे नॉन फाइनेंशियल्स में कहा था सप्लायर, और वो यहाँ पे इट विल बी डीएसए, क्योंकि डीएसए इज सो, एंड ऐसा नहीं है कि मे बी ही विल टेल गुड और बैड, ही कैन गिव अस अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि कौन सा बैंक वो कहाँ हमको, वो ट्रेड रिसीवेबल भी होता है और ट्रेड पेबल्स भी होता है डीएसए, वो ऐसे सेलेक्टिंग। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ही कैन गिव अग्रेसिव लोन बुक टू बैंक्स। ओके, अग्रेसिव लोन बुक मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स, कंजर्वेटिव लोन बुक मतलब ट्रेड पेबल्स, because he is going to earn some commission from the bank is going to give some money to him. If that is late payments, he will not be happy. Then he'll start telling about the bank, ये नहीं है भाई, ये नहीं होता है, वैसे बहुत बहुत बकवास है, मतलब they're very bad bank, उसमें मत जाने का। ओके, फाइन। सो इज अ ट्रेड पेबल एज वेल एज ट्रेड रिसीवेबल, दोनों साइड का काम करता है वो। अच्छा, so we also have to understand his biases because okay, and यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोसेस, which is why I think retailers इतना, मतलब एज अ रिटेल इन्वेस्टर we only have limited time कि हम इतना ज्यादा डिटेल में जा सके, which is why we need people like so you. now अभी yes so till now we talk about only bank. If you go for NBFC, they are again different ballgame. Fine. तो उनका कैपिटल लॉक भी नहीं होता है। हाँ, so अभी let's not just go in that detail in NBFCs, banks में I think we've covered, but अभी भी हमने qualitative aspects को काफी ज़्यादा touch किया है. Like you have certain formulas or certain ratios for non-financials. Do you have some ratios of sorts for banks? क्योंकि यहाँ पे cash flow from operation भी नहीं है, यहाँ पे मतलब पूरी financial There is statement cash flow from operations, but उसका नाम है cash flow from financing activity. Exactly. So how do we approach this? हम इसको कैसे approach करें? And do you have any ratios of sorts? Or most of our forensics will be very qualitative in nature when we are doing it for banks. So इसमें ratios मतलब क्या होता है ना, हर एक कंपनी के लिए हर एक खुद रेशियो बनाना पड़ता है। Okay. There is not being a same ratio for same industry or same company. Even a company is not manufacturing or non-manufacturing anywhere. You could go financial services or manufacturing. तीनों sectors पे you have to apply the ratios in a different way. Okay. That comes your age. That comes with your age. What you understand. Where have you worked for? वो बोलते हैं ना, लाइक तुमको इस सेक्टर में इतना काम किया तो उधर उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना, डोंट गो फॉर अदर सेक्टर। लाइक वॉरेन बफेट टेल्स, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, तुम्हारा सेक्टर पे तुम खुद इन्वेस्ट करो। यू आर बीइंग ए डॉक्टर, देन इन्वेस्ट इन डॉक्टर वाला, तुमको पता रहेगा कौन सा फार्मेसी अच्छा है, कौन सा ये मेडिकल अच्छा है। उसको जाके ऑयल कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत करना। सो आई सी बैंक्स एनालाइज करने का टाइम पे, एनबीएफसी एनालाइज करने का टाइम पे, बैंक्स में क्या होगा, सेपरेट सेपरेट कंपनीज के लिए भी हम डिफरेंट वे में देखना पड़ेगा। देयर इज नो एनी सर्टेन कॉल्ड एज रेशियोस। रेशियो खुद बनाना पड़ता है क्योंकि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। Yeah, absolutely. The essence of ratio is numerator and denominator. That's all. You play with what you want to go with. बिल्कुल, and I think that only comes with experience. हम कोई एक thumb rule नहीं चिपका सकते कहीं पे भी to make sense of everything. I think that's totally fine. So we'll move to the next section, which is rapid fire. तो इसमें होगा क्या?
I'll give you certain situations कि ऐसा ऐसा एक company में हो रहा है. Do we see it as a red flag or no, or how do we approach it? As simple as that. We need not go into very details, but एक first time impression क्या होगा हमारा when we are approaching the situation, right? So the very first is कि what if the company stops doing con calls for next 2 to 3 quarters? Is it a good sign, bad sign? How do we approach? Normally companies what they do is that con call देने का time पे when their numbers are very good, no, they come up with con calls. When their Oh, numbers are bad, they come up with they tell that we don't have a con call. So that might be a good sign also, that might be a bad sign also. But for me, it's a bad sign. okay. What if key people in the organization, be it the CXOs, be it the auditor, also another key individual, maybe even one of the independent directors, they resign? How do we approach it? Is it a good sign, bad sign, situational? So here also we have to understand India का ICA का rule है. Hmm. India has a rule for CS. Every 5 years, the chartered account cannot be the same. Hmm. Yep. There was a company, recent company, because of chartered accounting resigning, they thought market thought it's a bad news. It's actually 5 years का years complete हुआ था उसका. अच्छा. So you have to And look कि directors. it is statutory. Even directors may, if it's a statutory requirement, then it isn't a bad news. Yes. Otherwise, not necessarily bad news also, Then but see, देखना है. Okay. yes. देखो पूछो मतलब क्यों? Why Fine. is the biggest? People talk about where, when, but it's the main question to be asked is why. Hmm. So if you read that book, there is some book which is actually talk about why, where, and when Okay. as these circles. So Hmm. your main focus should be on why. Hmm. I think it Okay. is 0 to 1 or something. I अच्छा. might be wrong about the book. I haven't read it, but maybe I've got to go through it. So next question is कि if in some company the management salary is, let's say, greater than 10%, although there's a statutory limit कि आप 10% of profit, although there is a statutory limit कि आप नहीं कर सकते, but if the management is drawing salary greater than its peers, right? So is it a bad sign, a good sign, or how? So it depends on the situations. If I'm doing great for my business, why not I should take my money, Hmm. right? Absolutely. But here, let me take an example over here. There is some XYZ company. It's a live example, but I'm not taking the name. It's Hmm. an XYZ company. If you take their salary, total employment cost है ना, जो Hmm. कंपनी का P&L स्टेटमेंट में होती है, Hmm. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी होती है, कितना दिया है. So total employment cost divided by number of employees. Number of employees किधर से ले सकते हैं? Sources like LinkedIn, sources like तुम कंपनी का खुद कॉल Hmm. करके क्लाइंट में से भाई कितना लोग काम कर रहे हो तुम्हारे कंपनी में, टेक इट एवरीवन. सो डू दैट एवरेज नंबर, कितना Hmm. लोगों को क्या एवरेज सैलरी आएगा. देयर इज अ कंपनी which had an employee cost of 60,000 per year. Okay. 60,000 per year. Per year, Okay. yes. It's a hiccup. Per head. So then I know इस कंपनी को तो कभी हाथ नहीं लगाने का. But if you see Hmm. stock price going up, Hmm. Okay. तो such a हमें, mismatch, right? yes, exactly. Okay. Another one being, what if there is a sudden rise in other expenses in 1 quarter? So other expenses, it's again a plug multiple. Let me tell you, other expenses तुम जाके notes to accounts नहीं देखेगा, तब तक नहीं समझ में आएगा क्या है Hmm. other expenses. Fine, fine, fine. देखो उधर हो सकता है वो other expense किसी और wanted reason पे यूज किया होगा. Hmm. Fine. So I cannot tell it as a red flag or anything. What if there is sudden increase in auditor salary in 1 year? It have to be a sudden increase in auditor salary because every 5 years the auditor is changing. अच्छा, हाँ. Then okay, fine. And Because why will the other person be happy to get a salary at lower prices? नहीं, And बिल्कुल. but don't see the relation of revenue. If revenue is growing, salary is going more than hypothetically that number. And see, उससे ज़्यादा don't even do this ratio. Just see that same auditor किसी और कंपनी का भी रहेगा. Hmm. If that company is very way bigger than this company and उस कंपनी का सैलरी कम है और इस कंपनी से ज़्यादा ले रहा है, तो कुछ तो कर रहा है. Wow. नहीं सही है. And कुछ मत करने का, डोंट इवन सी रेवेन्यू से वो भी जस्ट hmm. को थोड़ा ये चीज करने का. यही ऑडिटर किस और कंपनी के साथ काम कर रहा है, उसका सैलरी क्या है और इधर का सैलरी क्या है, और वो कंपनी बड़ा है क्या और ये कंपनी छोटा है क्या, Hmm. देन यू कंपेयर इट. So you've seen this happen only in obscure CA firms, और ये Big Four में भी आपने
ऐसा हो सकता है कि बिग फोर में भी देखते हैं, बिग फोर में भी हो निफ्टी सकता 50 में, yes, I have examples but I'm not taking them. Nifty 50 there are a lot of companies. है. Okay. Lot So matlab I can take number also 10. okay, it's fine. So another one being कि if the organization structure, if the corporate structure is very complex, उसमें joint ventures हैं, subsidiaries हैं, step down subsidiaries हैं, associates हैं, is it a good sign for you, a bad sign for you? Do you ignore it or how? Yes, I ignore that because we don't prefer in our organization. We prefer like any business which has only three, max to max three businesses in it. नहीं सही है. So we don't want to take. I think that's a very personal preference also. इसमें there is no thumb rule. I तो personally I'm individual जो मुझे खुद इतने complex structure समझ ही नहीं आते कि where is money going from where, and rather than focusing a lot, I'd rather focus on a business जिनका they only focusing on their core operations. And I think वहाँ पे we can have an edge than a company like this. It depends on person to person. There might be people who are interested in Reliance and L&T. So but I'm not, because मुझे उधर बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं समझ ही नहीं पाता उतना businesses को. What if the promoter is having political connections? Is it a good sign, bad sign? Okay, let's take an example only. So tell me, Reliance, when did Reliance start? Reliance started. धीरूभाई अंबानी से start हुआ था. Yep. Very very old company. तो उन लोग उधर से उस दिन से आज तक ग्रो हो रहे हैं. Simultaneously, Adani उसी टाइम से अभी तक ग्रो हो रहे हैं. Tata's is growing from that time to this time. They all are related to political parties. People tell that, people talk Reliance is related to political party. People now, if you see a lot of news, they tell that Reliance is because of BJP, Reliance is flourishing. Because of BJP, Adani is flourishing. Yes. But we have to see that they started their businesses in Congress times. They are on that day also they become big. Today also they become big. Okay. It's not the connection matters. It's actually the person, what his intentions are. Okay. So I think this is a very shallow way of looking at things. ये सिर्फ एक overview सा देता है and really just stops you from actually diving deeper into understanding what business actually does. Okay. Yes. This is a good one. If there is any unspent corporate social responsibility fund, मतलब it was allocated, साइड में रखा था, but वो spend नहीं हुआ है. पहले तो how do we identify whether वो spend हुआ है कि नहीं? And अगर वो नहीं हुआ, I'm assuming it will be a red flag, right? It is a red flag if it is not unspent, but if it is unspent by a reason, then it is not a red flag. But let's take if it is spent also. I know a company, it's a very big organization. This organization is a banking sector, and this company actually spends that money जो corporate social responsibility बोलता है 2% का 2.5 or 2. So whatever they spend, right, they actually train for them to write NISM exams or AMFI exams. Okay. और उनको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं. और वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के बाद उसी से रेवेन्यू लेते हैं. तो उसका बोलते हैं मेरा कंपनी का म्यूचुअल फंड बेचना. Okay. So even that is a red flag per se. Red flag. And you have to go and see where it is actually spent. And how do we know whether there is an unspent CSR? क्या हमें एनुअल रिपोर्ट में नंबर मिलेगा? और एनुअल रिपोर्ट में नंबर है कहाँ पे? लाइक दी CSR एक्सपेंस कहाँ पे? CSR एक्सपेंसेस में होता है. इट विल एक्चुअली बी, तुमको CSR एक्सपेंसेस को कैश फ्लो के साथ मैच करना पड़ेगा. ओके. तो कैश फ्लो में रहता है ना, किधर आया है किधर जाया है, तो सब कैश फ्लो में रहता है. तो उसके साथ साथ गो एंड सी द CSR एक्सपेंसेस, दोनों मैच करो. See, any statement or anything you match, any company you talk about, take all three statements, keep it in front of it, take a Xerox, keep it, see three statements simultaneously, go like this. Or else you'll never understand. There is let me take another example. Employee, if you want me to deviate, I can go. So one example, I will if you give me the chance, I'll take one example. There is a company who's actually the 60,000 which I told about employee cost. This company is not paying. This is a good company. Let me tell you, it's a good company. It's not a bad company. But how they are actually deviating this 60,000? We don't touch that company, by the way. But it's not even bad also. It's not even good also. But I feel it might be a good company also. Because they give ESOPs. Acha. They give ESOPs. It doesn't come under cash flow statement. There is no cash entry only for ESOPs. Yep. So when I know there is no cash entry for ESOPs in cash flow from operations,
I know cash flow is also manipulative number. Hmm. You have to even sit and calculate even cash flow statement by your own. There's that much tedious work to be done. Okay. बट आई एम अज्यूमिंग जो ESOPs का होता है उसकी एंट्री पीएनएल में तो आती है, राइट? इट डज गेट रिफ्लेक्टेड एज एन Yes, एक्सपेंस इन आर पीएनएल, बट कैश फ्लो में नहीं आता, सो देयर कैन बी अ मिसमैच. because there is yes. Fine. Last rapid fire question is, how do we judge the independence of a director? And although books में तो he or she is an independent director, right? But how do we ensure कि वो actually में independent है कि नहीं, or whether there is a conflict Okay. of interest? Like, can we ever know this, If you or? are, yes, it's possible. It's very easy to do also, and this is the easiest part to be done. अच्छा. If is independent, वो independent है नहीं है, वो easy है. कैसे? उस independent का divine number रहता है. Hmm. He has a number. Independent director का number रहता है. Yep. Take that number and see where and all is an independent director. Hmm. Is he in the same? Is he related to this people only, or is he related to so many other places? Like there is a person who is related in different businesses, different places also. He's serving his directorship there. Huh, he's actually an independent director. Yes. It's so easy task to be done. I On even Google search, it helps us. even I recall researching on a company. वहाँ पे similar situation थी, wherein I was researching one company of a group. वहाँ पे there were a couple of independent directors. But जब मैंने भी थोड़ी सी research किया, I realized that those independent directors are common in all the group companies. And बस वो अंदर ही अंदर shuffle होते रहते हैं. So कहने को Huh. they are Then is a red independent, flag. then it is a red There is flag a red flag. because they aren't Yes. really independent. Yes. Perfect. So I think we've covered a lot. And before I let you go, I have a couple more questions. One of them being that if I really want to get extremely deep into this whole forensic space, can you refer me any resources? Maybe books, webinars, courses, or anything of that sorts that can help me become a better forensic investor. So it's like not. Let me again take this point. Forensic मतलब forensics नहीं होता है. नहीं. तुमको be you act like a Sherlock Holmes. तुमको देखो हर एक चीज में क्या क्या नेगेटिव निकाल सकता हूँ. It's more easier than telling इसमें ये अच्छा है बोलने में. Like if you are my friend, I can tell you like ये अच्छा है इसमें. उससे इजी मुझे क्या रहेगा, इसमें ये बुराई नहीं है. Okay. अच्छा बोलने से इसमें ये बुराई नहीं है, ये तो बोल सकता हूँ ना. That's the reason I'm his friend. Yep. So वो ढूंढो, हर एक स्टेटमेंट में वो ढूंढो, इसमें क्या क्या बुराई नहीं है. That it comes with learning. And इसको if you want any resources to be read on, there are a lot of one of the investors like you can actually read Investing for Growth. It's a book By Terry Smith. By Terry Smith, yes. So you can read that book. You can actually read Financial Shenanigans and create creativity with cash flow statement. Okay, fine. And सबसे ज़्यादा easy financial statement समझना, like you are very very basic, just read financial reporting. There's a book called Financial Reporting. It's the best book sold in the industry. 30 lakh copies sold. Acha, that's fine. And also on the same tangent, जब हम actually में इस subject के बारे में बात कर रहे हैं, is it important for me to have extremely deep understanding of technical aspects of accounting, or even my common sense can sort of help me out? Are both of these substitute of each other? Do they complement each other? How does this work out? So they complement each other. Okay. तुमको थोड़ा knowledge भी ये होगा, like सबसे ज़्यादा ना, if you want to understand any company उसका financial statement, do your own business. खुद एक business start करो, खुद का financial statements बनाओ, और खुद को समझ में आएगा क्या क्या गलती कर सकते हैं. Then search it in other business. और उससे भी और अच्छे समझ में आना, there can be a business without net profit with cash flow के basis पे surviving, but there cannot be a company cash flow statement negative पे है and P&L positive पे है. This cannot happen. Yes. इतना तो basic common sense चाहिए. बिल्कुल. So I think this was a very wonderful session and मेरे को तो बहुत सीखने को मिला. We talked about a lot of different cases and hopefully future में whether any of the audience members are doing the research, उनको भी अगर ये key patterns identify हो जो आज कौशिक ने समझाए, maybe they will understand कि yeah, it is a red flag and थोड़ा सा और deep dive करने की जरूरत है. Thank you so much, Kaushik. Before I let you go,
how can my audience reach out to you? How can they learn more about you? The stage is all yours. So they can actually reach out to our company website called moatindia.com. So you please subscribe their our newsletters and blogs, and as well as what we see. There are like 3-4 sections. So we keep on writing. इसमें हम इस concepts पे बात करते रहते हैं और बात लिखते रहते हैं. So we share by our website. So blogs उधर पढ़ो. You might be happy that we might be happy. You can reach out to us anytime. Please talk to our sales team. They will they will give you a contact of mine. So we can actually sit and talk about this and then Absolutely. understand each other. So I'll make sure that मैं सभी social media handles की details नीचे डाल दूंगा along with all the books as well जो कौशिक ने refer की. Again, thank you so much Kaushik for being here. Much appreciated.